हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स ताज़ा। आज हम कर रहे हैं राजस्थान वर्सेस दिल्ली का पोस्ट मैच एनालिसिस। तो फरहाद, दिल्ली ये मैच जीत के इज़ ऑन फिफ्थ पोजीशन इन द पॉइंट्स टेबल, स्टिल कीपिंग द प्लेऑफ्स होप अलाइव। एंड हाउ गुड वाज मिचेल मार्श टुडे? आई मीन ही वॉज अमेजिंग मतलब हाँ ही वॉज अ लिटिल लकी ऑल्सो आई मस्ट एडमिट। वो लोग ने रिव्यू नहीं लिया था, पहले ही बॉल पे एलबीडब्ल्यू था आई थिंक। बट yeah, he played really well. He really cashed on the chances that he got early on in the innings. And ऐसी पिच पे आई थिंक ये पारी खेलना मतलब और बड़ी बात हो गई, because you know at the halfway mark I thought that 160 was a good score. It wasn't a bad score considering the fact that pitches have slowed down over the course of the 2 months जहाँ IPL चला है. एंड वी सीन रिसेंटली कि चेज नहीं हो रहे थे इतने टोटल्स, कल भी नहीं हुआ था, उसके पहले भी नहीं हुआ था. सो टुडे इट वाज अ गुड स्कोर आई फेल्ट. एंड the way Warner and Mitchell Marsh they played, they were excellent. पर उनको फरहाद, चांस ही इवन नहीं इन द मिला. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन संजू सैमसन ने कहा कि दे वर 10-15 रन शॉर्ट। दिल्ली ने मतलब जैसे कहते इट वाज अ गुड पिच टू बैट फर्स्ट। अब जैसे ट्रेंड हो गया कि टॉस जीतो बॉलिंग लो, तो डू यू थिंक दैट विल रिड्यूस एज द पिचेस वेयर आउट एंड ग्रेजुअली? हमने कल देखा और लास्ट 3-4 मैचेस से देख रहे हैं, टीम्स बैटिंग फर्स्ट आर विनिंग मैचेस एज वेल। जो स्टार्टिंग फर्स्ट 28 मैचेस में नहीं था, जिसमें सब लोग टॉस जीत रहे थे, मैच जीत रहे थे, फील्डिंग ले रहे थे। डू यू थिंक दैट विल चेंज नाउ? आई थिंक इट विल, क्योंकि स्पेशली द बॉम्बे लेग, आई थिंक लास्ट लीग मैच तक आई थिंक ये ट्रेंड चेंज होगा. मुझे लग रहा है पीपल विल वांट टू लुक टू बैट फर्स्ट, probably more so in the night matches I feel, क्योंकि अंडर लाइट्स और ज्यादा मतलब दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू अ डे मैच. बट या आई मीन आई डू सी दैट ट्रेंड हैपनिंग, क्योंकि पिचेस स्लो हो गई है. इट्स गोइंग टू हैपन कि वेयर एंड टेयर होगा ऑन पिचेस, एंड इट इज गोइंग टू स्लो डाउन. इट हैज स्लो डाउन. आज भी मतलब एक मिरेकल इनिंग्स ही कह सकते हो जिसने दिल्ली को ओवर द लाइन किया आज. अदरवाइज इट वाज अ डिफिकल्ट टोटल. अगर शुरू में विन वार्नर ये लोग के भी चांसेस ले लिए होते तो देन यू नेवर नो, एक मिडिल ऑर्डर में घुसते एंड दे कुड हैव बीन अ कोलैप्स. सो या आई मीन हर हर बार चेज नहीं होगा जैसे आज हुआ है. आज मतलब पिच में भी वेर और टेयर था, लेकिन इतना नहीं था जितना स्क्वायर टर्नर जैसे कल था. कल इट वाज स्क्वायर टर्नर. सो आई फील कि पीपल, द कैप्टन्स विल वांट टू नाउ slowly change the strategy and put runs on the board. ओके, सो वेरी वैलिड पॉइंट। अगर हम मिचेल मार्श पे आए, टुडे ही स्कोर 89 रन्स और खाली बैट से कंट्रीब्यूट नहीं किया, ही टुक 2 विकेट्स एज वेल। तो डीसी का जो था कि पहले 6 बॉलिंग ऑप्शंस थे, कभी ललित यादव से करा रहे हैं, दे हैव रॉबमन पॉवेल ऑल्सो, कभी उनको यूज़ नहीं किया बॉलिंग की तरह, बट ही बॉल्स फॉर वेस्ट इंडीज़। मार्श ने भी पहले कुछ मैचेस बॉलिंग नहीं की थी। सिंस द लास्ट 3 मैचेस, जब से मुस्ताफिजुर को हटाया, तब से मार्श हैज़ बीन बॉलिंग। और पहले कुछ मैचेस में बैट से काफ़ी ही नॉन फ्लुएंट लग रहे थे। Hmm. लग रहा था कि जब पावेल फॉर्म में आए, सब कह रहे थे यार पावेल को अब रखो और मार्च को निकालो अगर फिज को लाना है वापस। बट टुडेज इनिंग्स बोथ एज एन ऑलराउंडर has justified his team selection and the entire Australian DC camp. He was batting with Warner, you have Shane Watson, you have Ricky Ponting, you have James Hope. इतने ऑस्ट्रेलियन भरे हुए हैं, so all of them will be very very happy with this contribution. Absolutely, and I also would like to say that जब उसने बैटिंग स्टार्ट की थी, वन मैच बिफोर ही got contracted with COVID, COVID, he yes. was making a comeback actually. वो मतलब थोड़ा रस्टी था. एंड तो वो ले आने में थोड़ा सा टाइम लगा है. एंड देन ही ऑफ कोर्स गॉट कोविड, मिस्ड आउट ऑन मेनी मैचेस इन बिटवीन. एंड जब से आफ्टर ही गॉट रिकवर्ड एंड उसने कम बैक धीरे धीरे, आई थिंक दे आर making increasing his workload probably in a phase wise manner. And I feel कि वो आज he had a perfect match, 2 wicket भी लिए. And 89, though he missed out on a century, I felt, if I have to be a little greedy, missed out on a maiden century, maiden IPL 100. But 89 was, I think, you would take it any day, in a run chase, of this एब्सोल्युटली। magnitude अगर आप on a global. देखें, पृथ्वी शॉ इज इंजर्ड, खलील आज इंजर हो गए थे, ही वाज बॉलिंग सो वेल एंड दे ब्रॉट केएस भरत। मतलब जो इनका एक इंडियन बैटर है ना, ये अभी डीसी फिक्स नहीं कर पा रही है। कभी रिपल पटेल को ला रहे हैं, कभी सरफराज को ला रहे हैं, केएस भरत को लाए। आई थॉट ही इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ही शुड Yeah. बी देयर इन द प्लेइंग 11 बेसिस व्हाट ही डिड लास्ट ईयर आरसीबी। पर दोनों मैच नहीं चले, आज भी डक पे आउट हुए एंड देन मार्श एंड वार्नर
स्टिच द 144 रन पार्टनरशिप ऑफ 101 बॉल्स। और जब आप लो स्कोरिंग टारगेट है, जैसे राजस्थान ने खाली 160 बनाए थे, उसमें अगर दो प्लेयर्स 144 की पार्टनरशिप कर लेते, द मैच इज ऑलमोस्ट गॉन। एंड यहाँ पे मैं वन फोर्टी क्रेडिट फोर की देना अगर ये चाहूँ। 100 भी होता ना, तो भी कहूंगा कि मतलब 100 ऑफ 75 मैच इज वेरी मच इन डीसीज हैंड्स। या एब्सोल्युटली, एंड यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहूंगा डेविड वार्नर का, बिकॉज ही हेल्ड वन एंड अप। अगर यस, डेविड वार्नर आउट होता है, ऑफ कोर्स ही वाज आल्सो वेरी लकी, बट वही है ना, टू बिग प्लेयर का क्या निशानी है, कि यू मेक थिंग्स काउंट व्हेन यू गेट दोस चांसेस, एंड आई थिंक वो मतलब मैच विनिंग 50 भी आप कह सकते हैं। हालांकि यू विल सी कि इट इज इन 40 ऑट बॉल्स, बट स्टिल आई मीन इट इज अ मैच विनिंग 50, एंड ही हेल्ड वन एंड अप। आई मीन अगर डेविड वार्नर वहां पे शुरू में निपट गया होता, तो देन that middle order was a little dicey today, I feel. स्पेशली आफ्टर रॉबमन पावल फिर इतनी बैटिंग नहीं थी, आपने देखा होगा अक्षर पटेल एंड शार्दुल एंड इवन ललित यादव फॉर दैट मैटर, वो इतनी नहीं है बैटिंग, वो पतली हो जाती है आफ्टर बिल्कुल। रॉबमन। एंड यू मेंशन्ड लक 3 बार, तो जस्ट टू टेल आवर व्यूअर्स, मार्च का एक एलबीडब्ल्यू था बोल्ट। बोल्ट भी काफ़ी कुछ मैचेस से काफ़ी आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, जैसे मुंबई के लिए बॉलिंग कर रहे थे लास्ट ईयर। राजस्थान में वैसा वो फ्लो, वो विकेट्स ना पावर प्ले में आ रही हैं। संजू सैमसन उनको लास्ट स्लॉग ओवर्स में भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इज फिनिशिंग इज कोटा बाय द 14th ओवर। But today he got KS Bharat. Then there was an option to actually get Mitchell Marsh. Sanju Samson did not take the DRS. And that Chahal over, मुझे लगा every ball that Warner played, Warner will get out. Like he was looking so out of touch कि मतलब कभी बेल पे लग रही है तो गिर नहीं रही। बटलर ने कैच छोड़ दी, which never happens. And it was such an eventful over, but so unlucky for Chahal. Chahal got 1 wicket of Mitch Marsh today towards the end, and he still has the purple cap, but very unlucky day for Chahal today. आई थिंक वेरी अनलकी डे इवन फॉर राजस्थान इन द फील्ड। आई मीन दे मतलब those chances should have been taken. Top teams capitalize on even half chances, ये तो बल्कि मतलब पूरा ही, and then when you see when luck doesn't go your way, it doesn't go your way, it's not your day. तो ठीक है, I wouldn't want to be too critical with Rajasthan. I mean they have been performing well. आज ठीक है, उनका फील्ड में ऑफ डे था, and they will learn from it. But today I think the एंड इनको कम नहीं आंकेंगे, मिचेल मार्श एंड डेविड वार्नर। आई थिंक लोग ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। आई थिंक द टू ऑजीज एंड द ऑजीज इन देम केम आउट टुडे, कि डोंट गिव Absolutely. अप वाला। So, yeah, So we've spoken a lot about this opening, not opening, मतलब Marsh came in the first over itself, but we've spoken so much about Mitch Marsh and David Warner. Time to get to Rajasthan. Butler पे मैं बाद में आऊँगा, but coming to the number 3 batter first, Ashwin. Ashwin scored his first IPL 50. He's been playing since season 1. पहली 50 मारी है. His previous best score was 45 runs. Do you think Ashwin at number 3 is a good option? And I'm asking this question even after he scored a 50 of 38 balls today. Do you think ये अच्छा ऑप्शन है या नहीं? ये मतलब ये गंदा एक्सपेरिमेंट है। see, you have to take into consideration कि वो किस सिचुएशन में आया था। ही केम इन एट 11 for 3, 11 for 1 in 3 overs, sorry. यस। And he faced 38 balls and 50 किया। तो the question that you have to ask is कि संजू सैमसंग अगर 38 balls खेलता, क्या वो सिर्फ 50 करता कि ज्यादा करता? Therein lies your answer कि it is not a good decision. Ashwin, even despite a 50 today, is not a good decision. I don't know why they are so hell-bent and adamant to push Ashwin at the top of the देखिए order. कुछ लोग इसको इतना अप्रिशिएट करें, कह रहे हैं कि राजस्थान ने अपना No, बैटिंग ऑर्डर लेंथन किया है, जो डेप्थ है उसको, मतलब क्योंकि अश्विन no, पावर no, हिटर no, no. नहीं है, ही कैन तो ओनली बैट ऐसा है पावर। तो ऐसा है तो आप फिर ट्रेंट बोल्ट को नंबर 3 पे उतार दो, फिर तो और लंबी हो गई बैटिंग। ऐसा नहीं होता ना, योर बेस्ट प्लेयर्स हैव टू प्ले एट द टॉप व्हेन मैक्सिमाइज द अपॉर्चुनिटीज दैट यू गेट, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ बॉल्स होते हैं, ओनली 120 बॉल्स यू हैव टू हैव योर बेस्ट प्लेयर्स। फिर आपने देखो ना हुआ क्या, मतलब अश्विन चलो खेल गए, he scored a 50, he scored a 50 of 38, got out, then came Sanju Samson, failed, देन then केम came डीडीपी, संजू डीडीपी। सैमसन नहीं ने नहीं तो हाफ नहीं नहीं, डी। मैं बोल रहा हूँ डीडीपी, एंड जब उनका पार्टनरशिप के बाद यस। जब अश्विन आउट हुआ, you know that time then came Sanju Samson, did not score. फिर राइन पराग डिड नॉट स्कोर, फिर वैंडर डूसन आपने मतलब पता नहीं कहा नंबर 7 नंबर पे खिला दिया आप उसमें, एंड वो पोजीशन क्लियरली नहीं है, तो मतलब यू डिडंट गेट दैट फिनिश एट द एंड ना। मतलब आप 18 ओवर लास्ट 2 ओवर में, मुझे जहाँ तक याद है सिर्फ 14 एक रन किया आपने मेरे ख्याल में।
So 14 you रन didn't आए finish. लास्ट ओवर में, यू करेक्ट. So you didn't finish well, right? So मतलब आपका टॉप पे अगर आपने उतना मारा होता, एंड इफ सैमसंग वुड हैव कम एंड आज गेम लेके जाता, आफ्टर बटलर गॉट आउट अर्ली, तो मतलब आज आप 180 पहुंचते, तो फिर कैसे चेज होता? आप देखो चेज होता क्या मतलब, अगेन हाइंडसाइड पे यूज से कि भाई 2 ओवर में 20 तो हो सकते, दिल्ली का ये, बट यू डोंट नो राइट, 180 वाला प्रेशर डिफरेंट एट द स्टार्ट ऑफ द इनिंग्स एज कम्पेयर टू 160 वाला प्रेशर, एंड यू बिल्कुल, हैव द पर आप बॉलिंग, अगर ये तो देखिए है ही। सैमसन ऑल्सो केम इन द 15th ओवर, एंड जस्ट टू क्लैरिफाई, आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ. 50 मारी आज, पर मैं भी नहीं मानता कि अश्विन एट नंबर 3 इज अ गुड गैम्बल. अगर आपको भेजना था वैंडरडूसन को भेज देते. आप आपको मतलब हिटर चाहिए, आप पराग को भेज दो. मतलब आई नो ही हिट अ 50, और क्योंकि एक्सपेरिमेंट चल गया, ये अगले मैच में भी होने वाला है. बट जैसे आपने कहा कि मैक्सिमाइज, यहाँ पे है कि टीम के बेस्ट बैटर्स को मैक्सिमम बॉल्स खेलनी चाहिए. और ऐसा नहीं कि अश्विन एक फिनिशर रोल है, कि कुछ दो चीज़ें हैं, या तो आप मैक्सिमम बॉल्स खेलो या अपना रोल निभाओ. जैसे डीके का रोल फिनिशर का है, लेट हिम प्ले दैट रोल, इवन इफ ही कम्स आफ्टर द 16th ओवर, इट्स फाइन. रसल, पोलार्ड, इन सबका ये रोल है, इनको मैं पावर प्ले में थर्ड ओवर में भेजना नहीं चाहूँगा. बिकॉज वो 15th ओवर भी मार सकते हैं, थर्ड ओवर में भी मार सकते हैं. अश्विन शायद 15th ओवर में, वंस द फील्ड इज ओपन, के नॉट हिट. बट उसकी वजह से हुआ क्या, अगला डीडीपी आए, फिर सैमसन आए, फिर आरवीडी. आज हेटमायर नहीं थे तो एंड में लेट फ्लरिश नहीं मिली. तो सर्टनली आई एम नॉट टू हैप्पी विद दिस डिसीजन, बट आर विल कंटिन्यू, एंड पीपल आर कॉलिंग दिस अ मास्टर स्ट्रोक बाय द टीम मैं मैनेजमेंट. कहता हूँ पीपल आर वेरी आप हैप्पी आपकी that टीम they've जीतेगी meddled नहीं in the ज्यादा। batting attack and it's worked for them. So या आई एम सेइंग आपकी टीम ज्यादा जीतेगी नहीं अगर अश्विन इज योर नंबर 3 एंड कंसिस्टेंटली योर नंबर 3। आई थिंक ट्रेंड ये हो रहा है कि इफ आई डोंट नो, इट्स नॉट इवन अ ट्रेंड, राइट? आई मीन एक टाइम तो आई थिंक ही गॉट आउट ऑन जीरो, एक टाइम आई थिंक ही हैड जॉस बटलर बैटिंग विथ हिम व्हेन ही हैड कम। आज तो जॉस बटलर जल्दी निपट गया तो ही वाज विद जायसवाल। आई डोंट नो, समहाउ नो, अश्विन एट नंबर 3 नो। see, I agree, and it's also the number of balls he's consuming. Forget the करेक्ट, runs. He consumed करेक्ट, 38 balls. If he scored a 20 of 7 and get out, I'll be very happy, because I don't want him to consume more than 7 8 balls. If he's करेक्ट। consuming 38 balls, that is the issue. And मतलब स्टार्टिंग में तो पावर प्ले के बाद नेक्स्ट 15 बॉल्स उन्हें 10 रन ही मारे थे. ऐसा भी नहीं कि पावर प्ले के बाद उन्हें बहुत रन मारे. तो वो एक इशू था. वो 20 और 7 मारे आउट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर 50 और 40 मारेंगे तो मुझे दिक्कत है. नहीं बिल्कुल, आई एम विथ यू ऑन दिस, मतलब ये दैट्स व्हाई सैमसंग आपके पास ऑलरेडी एक प्लेयर है। करेक्ट, आई एंड ही डोंट इज नो बीन इन व्हाई ही। सच गुड फॉर्म. लाइक मतलब लोग हाँ, हमेशा उनकी कंसिस्टेंसी को लेके आते हैं, बट दिस टाइम उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी बिल्कुल वो इशू नहीं लाने दिया. मतलब फ्रॉम बॉल वन ही स्ट्राइकिंग द बॉल, बीइंग वेरी अग्रेसिव. एंड आज जब मतलब बटलर नहीं चले, जायसवाल स्लो खेल रहे थे, मैंने बोथ योर ओपनर्स आर नॉट प्लेइंग, तो मेल मुझे लगा था सैमसंग के लिए स्टेज सेट है. अश्विन ने 50 मारी, राजस्थान जीत जाती तो अश्विन को बहुत क्रेडिट मिलता. बट यस, कमिंग बैक टू अनदर की क्वेश्चन फॉर राजस्थान, जो शायद हमेशा रहने वाला है, इज राजस्थान टू डिपेंडेंट ऑन बटलर? यस एंड नो। नो. आई फील पहले आप नो बताइए, मतलब आई एम वेरी सरप्राइज व्हाई यू सेड नो. व्हाई आई से नो इज बिकॉज कि आई हैव आल्सो सीन देम विन मैचेस व्हेन बटलर हैजंट स्कोर्ड। सो ऐसा नहीं है कि दे आउट एंड आउट डिपेंडेंट। मुझे नहीं लगता कि अगर बटलर जल्दी आउट हो गया तो आई मीन इट्स गोइंग टू रियली हैम्पर देयर बैटिंग। एंड व्हेन आई से यस, मतलब कि वो स्टार्ट नहीं मिलेगा आपको, मतलब जो बटलर जो काइंड ऑफ स्टार्ट देते हैं, आई थिंक द टैक्टिक दैट ही यूजेस जस्ट सी थ्रू द फर्स्ट 2 3 overs and then take off, and उसके पहले अगर you've got him out then you are in the game, so to say. But yeah, I mean it's a bit of a yes and no. I mean Butler is definitely a very important wicket for Rajasthan, but over dependent on Butler, I don't think so. I mean, they have players नीचे, हाँ, if you get too deep, then वहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं, after say Hetmeyer, आज खैर नहीं थे Hetmeyer, but after a Hetmeyer, then they struggle. But then I think till Hetmeyer, I think they have the batting. आज तो DDP also scored well, so I would say a bit of yes and no. ओके, फेयर आंसर, बट आई स्टिल थिंक राजस्थान इज टू डिपेंडेंट ऑन बटलर. मेरा आंसर येस ही होगा. मैं नो की तरफ कम लीन कर रहा हूँ. एंड आई नो हेडमायर wasn't today who's been so good for them. मतलब आप खाली रन नहीं दे सकते. रन शायद 280 290 रन ही है, बट यू लुक एट द स्ट्राइक रेट, मतलब कितनी Yeah. बॉल्स मिली है. With the limited opportunities he's got last year for DC, this year for Rajasthan, I think the finisher role, one of the best finishers I would say, who's been going around in the overseas players.
So Hetmyer will be back for Rajasthan hopefully in the next game. एंड जाने से पहले एक बार पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं बिकॉज पॉइंट्स टेबल इज गेटिंग वेरी वेरी हीटेड अप एंड अच्छा। जीटी के आगे क्यों लग गया है सी एस के एम आई मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ लोग अभी भी सी एस के पे होप रख रहे हैं बट you look at this table Rajasthan 2 matches left at 14 RCB 2 matches left at 14 DC 2 matches left at 12 SRH 1 match less at 10 KKR ने अपने होप्स अलाइव रखे कल they are also at 10 Punjab 1 match less than KKR at 10 what are your predictions for the next two मतलब GT LSG प्रेडिक्शन बता रहा हूँ थर्ड और फोर्थ टीम मतलब forget the order दो और टीम आप कौन सी कंसिडर करेंगे for playoffs I think one will be Rajasthan, I think, and I think there'll be a surprise at number four. Probably it will be one between DC and I think मैं RCB को भी रखूंगा, but then तो आप तो it's फर्स्ट फाइव में ही जा रहे हैं मतलब सरप्राइज क्या हुआ यू आर जस्ट टेकिंग द फोर्थ एंड फिफ्थ actually one thing I also wanted to I was just seeing the fixtures, being a CSK fan as well. मैं मतलब आपने कहा था होप है डिस्काउंट करो. मतलब होप तो कभी जाएगी Hope, नहीं technical hope है, but it's going to be difficult. But the point to note is that CSK have a match against RR, and they फर्स्ट दे have हैव अ मैच अगेंस्ट एमआई टुमारो द कल एल MI है, then गुजरात है, and then RR है. यस मैं वही कह रहा हूँ एल क्लासिको माइट नॉट लिफ्ट टू इट्स हाई मतलब टू teams in the bottom league Yeah, but still I so expect it to be a good match tomorrow nonetheless I do too, and so CSK का marginal hope है, but I don't see them getting top four. एक एक करके चलते हैं. I mean, just quickly go through it 30 seconds में. पंजाब का again I have my doubts. I don't think they have the caliber to leapfrog ahead. KKR definitely not. I'm बट ruling पंजाब them में off. मतलब देयर वाज वन की एरिया द ओपनर्स नॉट फायरिंग उन्होंने बेस्टो को लिया है ही इज वर्कड मयंक को नीचे शिफ्ट कर दिया है एंड बेस्टो इज बैक इन फॉर्म एंड But रबाडा इज it's a टेकिंग volatile team. I feel it's a very volatile team. They don't have that consistency. And यहाँ पे क्या है कि it's like a do or die. Like हर match do or die है. तो एक match यस I think वो slip up करेगा is what my calculations is. ओके So चलिए पंजाब मेरे लिए तो नहीं है. KKR definitely नहीं है with all the mess that they have gone through. SRH has an outside chance, but SRH का भी वही problem है कि they peak too early. So Do you SRH का think भी Williamson can win them the next 3 games? with the bat, it becomes a little difficult. I feel no. No, I would say no. So If at all SRH have anyone now can, lost four on the if, trot. They won five also, but they've lost four now on the trot. So yeah, yes, if the main player I think is Umran Malik. जहाँ पे उमरान मलिक ने मार खाया है वो लोग नहीं जीते. And जहाँ पे उमरान मलिक has performed, वो लोग जीते. हाँ, that Pfeiffer came in a loss. That is, yes. I agree with that. But that was almost a game that was won, and they didn't have any support with anyone. So Umran Malik is the key in that SRH game. DC definitely has a chance now since they are on 12. They're just one step away from RCB. RCB ka is a very curious case. I mean, they have just 2 games in hand and it can go either way. I mean, they can just about, they just need to win one out of two. Same with Rajasthan. And assuming that CSK fan in me says that they're going to lose the Chennai match, means they have only one game in hand. Yeah. So it's going to be one of between for the two places, one of between RR, RCB, and DC. I don't think SRH भी 3 out of 3 at this stage जीतेगा मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है बाकी तो I don't give them a chance. आई एग्री आई थिंक फॉर मी टेबल में कुछ सरप्राइज नहीं होने वाली जो चार टीम अभी आप टॉप चार देख रहे हो यही टॉप चार जाने वाली हैं तो मैं डीसी एसआरएच पंजाब केकेआर चारों को बाहर कर रहा हूँ बट ऑन दैट नोट थैंक यू एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन डू सब्सक्राइब